We are on the last stanza of this poem and we are doing the paraphrasing of these stanza. And the last stanza is, for oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is bliss of solitude, and then my heart fills with pleasure and dances with daffodils. Students, we can paraphrase this stanza in this way. Often when I'm laying on my couch and feeling a bit emotionless, or we can say thoughtful, I can still see those beautiful daffodils in my mind. By the way, being able to remember those daffodils is quite pleasant for me when you are alone. It means कि जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं तो आपको इस किस्म की पास्ट की याद आपको खुशी से वो झूमने पे मजबूर करती है. Now when I recall the daffodils, अब पोइट कहते हैं कि जब जब मुझे वो डैफोडिल्स का सीन याद आता है, मेरा दिल खुशी से भर जाता है और मेरा दिल चाहता है कि मैं भी उन डैफोडिल्स की तरह झूमने लग जाऊं, उन डैफोडिल्स की तरह डांस करने लग जाऊं. आई फील वार्म एंड फजी एंड एज इफ आई एम डांसिंग विद द डैफोडिल्स. सो स्टूडेंट्स, ये थी पैराफ्रेजिंग ऑफ दिस पोएम. पैराफ्रेजिंग को पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आपको माइंड में रखना होगा कि सबसे पहले आप पैराफ्रेजिंग का जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, स्टैंजा लिखने के बाद आप रेफरेंस देंगे, रेफरेंस टू द पोएट. दिस स्टैंजा इज टेकन फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, या वी कैन से कि दिस स्टैंजा इज टेकन फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. उसके बाद आप पैराफ्रेजिंग की हेडिंग देंगे और पैराफ्रेजिंग पूरी पोएम को आप अपने और सिंपल अल्फाज में उतार देंगे. तो ये आपकी पैराफ्रेजिंग कंप्लीट हो जाएगी. आई होप आपको पैराफ्रेजिंग की समझ आई होगी. चलिए अगली वीडियो की तरफ चलते हैं. थैंक यू.